Assalamu alaikum students. I hope that you all will be alright. Let's start with the name of Allah, who is the perfect and giver of peace. Today we will discuss use of punctuation. The definition of punctuation marks is punctuation marks are marks or stops which divide a long sentence or a passage. Punctuation marks means मोज़े उकाफ ऐसे उकाफ हैं जो एक लंबे सेंटेंस और एक पैसेज को इनटू स्मॉल पार्ट्स टू इनेबल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ताकि काबिल हो जाए द रीडर पढ़ने वाला टू अंडरस्टैंड द मीनिंग प्रॉपरली उस सेंटेंस के या उस पैसेज के जो मीनिंग्स हैं उसको वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके. नाउ देयर आर सम पंक्चुएशन मार्क्स विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे. फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, exclamatory mark, apostrophe, dash, hyphen, inverted commas, parenthesis, capital letters. First we will discuss about full stop. Full stop, it is used at the end of assertive and imperative sentences. full stop जो है वो assertive और imperative sentences के last पे use होता है. For example, we help the poor, speak the truth, full stop. It is also used with abbreviations. ये abbreviations इन मुखफ़फ़ के साथ भी इस्तेमाल होता है. MA, MBBS. This is our full stop. Now we will discuss colon. It denotes the bigger pause. It denotes the bigger pause than full stop or smaller than semicolon. colon जो है वो एक लंबे वक्फे को जाहिर करता है जो कि semicolon और full stop से बड़ा होता है. मीन्स कि छोटे वक्फे को जाहिर करते हैं. टू मेंशन अ करेक्टर, फॉर एग्जांपल, टीचर कॉलन, व्हाई आर यू लेट टुडे? स्टूडेंट कॉलन, सर आई कुड नॉट वेक इन टाइम. सो दिस इज द यूज ऑफ कॉलन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेमीकॉलन. Semicolon is used mostly in these sentences where writer pause to stress anything. As semicolon जो है वो ऐसे sentences में use किया जाता है जहाँ पर writer जो है वो किसी बात के ऊपर stress करना चाह रहा हो. For example, the coconut tree gives us food. कोकोनट ट्री हमें फूड देती है. सेमीकॉलन, इट गिव्स अस ऑयल, ये हमें ऑयल देते हैं. कॉलन, सेमीकॉलन, इट गिव्स अस रोप्स, इससे हम रस्सियां हासिल करते हैं. When two phrases are used a sentence to denote the same fact as, जब दो phrases को एक सेंटेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है लेकिन दोनों को मीनिंग जो है वो सेम हो तो उनको कैसे लिखा जाएगा? मैंगो इज़ टेस्टी, आम जो हैं वो मीठे होते हैं. सो इज़ एप्पल, लिहाजा एप्पल भी, यानी दोनों मैंगो मीठा होता है इसलिए एप्पल की भी क्वालिटी जो है वो टेस्टी होती है. दोनों की क्वालिटी टेस्ट है इसलिए दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स, अबाउट फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकॉलन. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स. We have been discussed that full stop used at the end of assertive and affirmative sentences. Colon is used for smaller pause and semicolon is used to describe the same qualities in one sentence. I hope that you have understand it. So students, stay home, stay safe for yourself and for your family.